How to invest like Warren Buffett. Okay, so Warren Buffett is unarguably one of the greatest investors of all time. He's been called the Oracle of Omaha, the Sage of Nebraska, and from a young age he knew he would be rich. That prophecy did come true, and today he's worth about $80 billion. At a young age, Warren would buy 6 packs of Coca-Cola for a quarter and sell each for a nickel. He also sold the newspapers and magazines door to door. He collected and sold golf balls, and in fact, he even got other kids from his neighborhood to collect and sell golf balls as well. He had all sorts of small ventures. He grew up knowing he wants to make money. He said he loved doing business, and armed with about $114 in which he had saved in 1942, he bought his first stock called Cities and Services. He said he went all in and made a good return. And I think it's safe to say the kid had a bright future, and together with his partner Charlie Munger, they have created one of the largest corporations in the world. So luckily for you and I, Warren has left clues as to how he became so successful. So in this video, I'm going to share 10 principles for investing that anyone can use to become rich. So whenever Warren goes hunting for companies and businesses to buy, he looks at the management team first, whether they're talented and competent, and if so, he buys shares in the business. One of his policies is not to buy 100% of a company or a business, but to own an uncontrolling but substantial portion of the business. After all, when you own hundreds of companies, who has time to run them all, right? Warren has invested in a vast amount of businesses over the years, ranging from lollipops to jet airplanes. Some of the businesses measured by earnings enjoy terrific economics, producing profits that run from 25% after tax to far more than 100%. Others generate good returns in the area of 12% to 20%. However, a few of the businesses he has invested in have very poor returns, a mistake he attributes to missteps he made in capital allocation and evaluation of the economic dynamics of the companies and the industries in which it operated in. On the other hand, these missteps he attributes to the poor returns are usually small blunders in the overall balance sheet. So keep your mistakes to a minimum and don't be shy about taking calculated risk. Never gamble with your money, but invest in a venture that has a good chance of succeeding. Focus on the future productivity of the assets you are considering investing in. If you don't feel comfortable making a rough estimate of the asset's future earnings, just forget it and move on. No one has the ability to evaluate every investment possibility, but omniscience isn't necessary. You only need to understand the actions you are undertaking. Warren Buffett says, you don't need to be an expert in order to achieve satisfactory investment returns. However, you must recognize your limitations and follow a course certain to work reasonably well. Keep things simple and don't swing for the fence. When promised quick profits, respond with a quick no. When investing, if you focus on the prospective price change of a contemplated purchase, you are speculating. There is nothing improper about this though, but you should be skeptical of people who claim that they can accurately predict the future price of a stock with no solid evidence to prove so. Half of all coin flippers will win their first toss, but none of those winners are assured of profits if they continue to play the game. The fact that a given asset has appreciated in the recent past is never a reason to buy it. Don't keep watch of your stocks daily. In Warren's annual report, he wrote, "With my 2 small investments, I thought only of what the properties would produce and cared not at all about their daily valuations. Games are won by players who focus on the playing field, not by those whose eyes are glued to the scoreboard. If you can enjoy Saturdays and Sundays without looking at the scoreboard, give it a try on the weekdays. Forming macro opinions or listening to the macro or market predictions of others is a waste of time. Indeed, it is dangerous because it may blur your vision of the facts that are truly important, such as the annual report of the business, future plans if they have any, the management team, are they competent or not, such things." Emotions aside, owners of stocks, however, too often let their emotions and irrational behaviors of their fellow owners cause them to behave irrationally as well, because there is so much chatter about markets, the economy, interest rates, price behaviors of stocks, etc., that you are overwhelmed and end up making irrational decisions. Some investors believe it is important to listen to pundits, and worse yet, important to consider acting upon their comments. People too often become frantic when they hear chit-chat about an inside trade or deal they just can't miss on. And worst of all, they act on this false information without putting any time to research whether this information holds any merit or not. Never take investing advice from someone who doesn't have a clue about investing. The point is, do not make life-changing decisions
predicated on tips or rumors you might have overheard. Do not take investing advice from friends and people who know nothing about investing or the stock market. If your best friend or coworker is advising you to invest in a particular stock or business, don't just jump into it. Critically analyze the information he or she is providing you. Ask them where they got the information from and who gave it to them. It might actually be a good tip, but first do your own due diligence before investing. A flash crash or some other extreme market fluctuation is really bad for your average Joe, but it seldom hurts a seasoned investor because while other people are seeing red flags and smoke everywhere, all a seasoned investor can see is opportunity. Indeed, troubling markets can be a great opportunity to the true investor if he has cash available. So always have a reserve for such moments. Warren wrote, "A climate of fear is your friend when investing. A euphoric world is your enemy. Never buy at a premium, always have cash laying around for such times, because the market will bounce back, it always does." When Warren and Charlie buy stocks, they think of it as a portion of the business. Their analysis is very similar to that which they use in buying entire businesses. They first have to decide whether they can sensibly estimate an earning range for a 5-year period or more, and if the answer is yes, they will buy the stock or business if it's selling at a reasonable price in relation to the bottom boundary of their estimates. If, however, they lack the ability to estimate future earnings, they simply move on to other prospects. Warren Buffett said that in the 54 years he and Charlie have worked together, they have never forgone an attractive purchase because of the macro or political environment or the views of other people. In fact, these subjects never come up when they make decisions. So don't let small circumstantial issues hinder you from making a good investment. Most investors, of course, have not made the study of business prospects a priority in their lives. If wise, they will conclude that they do not know enough about specific businesses to predict their future earning power. But Warren Buffett says, "I have good news for the non-professionals. The typical investor does not need this skill. In aggregate, American businesses have done wonderful over time and will continue to do so, though most assured in unpredictable fits and starts." In the 20th century, the Dow Jones Industrial Index advanced from 66 to 11,500, paying a rising stream of dividends to boot. The 21st century will witness further gains, almost certain to be substantial. Warren says the goal of the non-professional should not be to pick winners. Neither he nor his helpers can do that. Rather, it should be to own a cross-section of business that in aggregate are bound to do well. A low-cost S&P 500 index fund will achieve this goal. It is no secret that Warren plans to give away most of his fortune to charity upon his passing. In his will, he said, "My advice to the trustee could not be more simple. Put 10% of the cash in short-term government bonds and 90% in a very low-cost S&P 500 index fund. I suggest Vanguards," he said. "I believe the trust's long-term result from this policy will be superior to those attained by most investors, whether pension funds, institutions, or individuals who employ high-fee managers." So in conclusion, these are just 10 things that Warren Buffett and seasoned investors use to become rich, and by employing these habits, you'll be much better equipped to become wealthy yourself. Thank you for watching, guys, and I guess I'll see you on the next one. Cheers. Warren Buffett is the most successful investor in the world. Not only has he posted record high returns, Buffett has also managed this over a time period of over 60 years. It's a testament to Buffett's ability to think long term. But Buffett doesn't just spend his time thinking about securities either. He spends a great deal of time thinking about how we can live better. We see this in an anecdote from one of Buffett's employees. The story goes that Buffett one day approaches his pilot, Mike Flint, after realizing that Flint had worked for him for the past 10 years. He wants to discuss Flint's career goals and how he can help him achieve them. "The fact that you're still working for me," Buffett jokes, "tells me I'm not doing my job." To map out his goals, Flint was asked by his employer to conduct a simple exercise. It would change the way he viewed his priorities forever.
The first step in this exercise was to list down 25 things that Flint wanted to accomplish in the foreseeable future. Nothing was off the table. Secondly, Flint was to rank these items in order of importance and circle the top 5. Prioritising his goals was more undoubtedly challenging than listing them, but Flint managed it. Just when it appears as though the most challenging part of the exercise was over, Buffett asks Flint a seemingly simple question. What are you going to do with the remaining 20 items? Well, the top 5 are my primary focus, but the other 20 come in at a close second, Flint explained. He goes on, they are still important, so I'll work on those intermittently as I see fit, as I'm getting through my top 5. They are not as urgent, but I still plan to give them dedicated effort. At this point, Buffett's expression changes a little. He responds sternly, "No, you've got it wrong. Everything you didn't circle just became your avoid at all cost list. No matter what, these things get no attention from you until you've succeeded with your top 5. Avoid at all cost? Flint certainly wasn't expecting that. There's more competition for our attention than ever. Choices have never been more abundant than at any other time in history, and it's unlikely we'll be constrained any time soon. In fact, our options are likely only going to expand as we advance further into our careers. It's the primary reason why most of us will never reach the level of competency needed to reap the rewards of being a superstar. Each time we pursue a new course of action, we incur an opportunity cost. It takes our time and attention away from the things that are most important to us. Your odds of success improve when you direct your focus into a singular pursuit. You have to double down on a few things and rack up the hours trying to get really good at that. It's what Cal Newport calls the craftsman's mindset in So Good They Can't Ignore You. Craftsmen often start off as apprentices to a master and spend years learning the basics. They then become journeymen, where they add their own style and tastes to create work with little nuances. That's when they finally attain mastery. They don't get distracted by the latest fad or jump from one interest to another. Spending time on a singular focus helps them get the important things done. Buffett spoke about the 5-25 rule in relation to career goals, but I think it extends far beyond that. We can attain the same results if we apply it to our health, relationships, and personal goals. The corollary seems to be that we're forced to lead boring lives without options, but that's not true. The 5-25 rule's only requirement is that you finish the top 5 items before moving on to item number 6 and beyond. Think about all the things you have wanted to do. You might want to master another language, play a musical instrument, start your own business, practice a new martial art, travel around the world. But for most of us, we never really make any progress. It's a sign that these items on the list aren't really important to us. Most of us pick these items because they provide some form of benefit, and while they are nice, they don't sufficiently motivate us to follow through. For example, it's cool to be able to speak 10 different languages, but spending your weekends learning the rules of grammar is not very exciting. Because it's not too high on the list of our priorities, work and family are more important than being a polyglot. We do this only in our spare time. That effectively means a single goal can take months, if not years, to ever accomplish. The result is that we have a list of items that we almost never get completed. This list only weighs on our mind and fills us with stress, guilt, and overwhelm. It's a result of the any benefit mindset. Pareto's principle, better known as the 80-20 rule, tells us that the majority of outcomes are driven by a small number of things that we do. Chances are that anything that falls outside your top 5 will have little impact on your life. Rather than add on, take the time to eliminate. The 5-25 rule is yet another example of how simplicity makes life better and easier. Time and attention are two of the most finite resources in the world. There will be more good opportunities than we realistically have time for. We shouldn't be quick to pounce on every one of them, because not all will be right for us. It doesn't matter how good an opportunity is
if all it does is advance goal number 25 for us. If we force ourselves to eliminate our options, we quickly find that only a few things truly matter to us. We would be best served if we ignore distractions and do more of what really matters. दोस्तों, हम हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स अपने लिए ज़रूर सेट करते हैं और पूरी लाइफ लगा देते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन बहुत से केसेस में आपने भी देखा होगा और मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जो गोल्स हम सेट करते हैं वो हम अचीव नहीं कर पाते। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मेरा दिमाग तो बहुत बार इस चीज़ में चलता है कि यार ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ वो हो नहीं पाता, या जिस लेवल तक मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ उस लेवल में उसको अचीव नहीं कर पाता। ऐसा बहुत से केसेस में मेरे साथ हुआ है और मैं श्योर हूं कि आपके साथ भी ऐसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में हुआ ही होगा। तो बात ये आती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, या ऐसा होता क्यों है कि हम जो गोल सेट करते हैं हम वो अचीव नहीं कर पाते पूरी पोटेंशियलिटी के साथ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं इंटरनेट पे एक आर्टिकल पढ़ रहा था सक्सेसफुल पीपल के बारे में। उसमें वॉरेन बफे के बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी। उसमें उन्होंने एक किस्से के बारे में बताया था कि वॉरेन बफे एक बार अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे। उनका जो ड्राइवर था वो बहुत ही ज़्यादा हताश होकर बैठा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होकर बैठा हुआ था, स्ट्रेस्ड आउट था। तो वॉरेन बफे ने उनसे पूछा कि आपको क्या हो गया है, आपका मूड कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ बात है तो बताओ। तो उनके ड्राइवर ने वॉरेन बफे से कहा कि सर, मैं अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहता हूँ वो मैं अचीव नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ से खुश भी नहीं हूँ इसी कारण से, क्योंकि मैंने आज से 5-10 साल पहले अपने लिए जो गोल सेट किए थे मैं आज उन गोल्स के आसपास भी नहीं हूं। आखिर ऐसा क्यों होता मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वॉरेन बफे ने हंसते हुए उनको बोला कि एक काम करो, गाड़ी साइड में लगाओ, अपन आज कुछ बात करते हैं। अपन ने कभी बात भी नहीं करी इस बारे में। तो उनका ड्राइवर थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसको अपने मालिक से ऐसी बात करने की उम्मीद नहीं थी। तो उसने बोला, नहीं सर कोई बात नहीं है, आपका काम ज़्यादा ज़रूरी है, अपन आपका काम करते हैं। तो वॉरेन बफे ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट हो, गाड़ी साइड में लगाओ, अपन बात करते हैं उस पार्क में चल के। उसने गाड़ी साइड में लगाई, वहीं पास में एक पार्क था, वहां जाके दोनों बैठे। वॉरेन ने फिर उसके ड्राइवर से पूछा कि तुम मुझे ऐसी बातें बताओ जो तुम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे, ऐसे गोल्स बताओ जो तुम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो उनका ड्राइवर कंफ्यूज हो गया, बोलने लगा, सर मैं एकदम से आपको कैसे बता सकता हूँ। तो वॉरेन ने कहा, फिर तुम उनको गोल कैसे कह सकते हो अगर वो तुमको याद ही नहीं है? तुम घर से कहीं जाने के लिए निकले हो और कोई तुमसे पूछ ले कि कहाँ जा रहे हो और तुम बता ही ना पाओ, मतलब क्या है, तुम उस जगह पे जाने के लिए सीरियस हो ही नहीं, या तुम कहीं जाने के लिए ही नहीं निकले हो। तुम्हें जब उस गोल का पता ही नहीं पता तो रास्ता पता होना तो बहुत दूर की बात है। उनका ड्राइवर को थोड़ा गलत फील हुआ कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ। तो वॉरेन ने उससे कहा, ठीक है काम करो, 15 मिनट का टाइम लो और मुझे कुछ गोल्स बताओ तुम अपने, जो तुम अचीव करना चाहते हो, जिनके कारण तुम परेशान हो। उसने ड्राइवर ने कहा ठीक है। 15 मिनट बाद उसने उसको 5 गोल बताया कि सर मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। वॉरेन ने उस पेपर को लिया और अपनी जेब में फोल्ड करके रख लिया। वॉरेन ने कहा, एक काम करते हैं, जहां अपन को चलना था अपन वहां चलते हैं, और इस बीच मैं तुमको टाइम देता हूं, तुम मुझे अपनी लाइफ के 25 गोल्स इस पेपर में लिख के दो, और इन गोल्स को लिखते टाइम ये ध्यान रखना कि जो भी 26वां गोल तुम्हारे मन में आएगा उसको तुम अपनी जिंदगी में कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो लिस्ट ऐसे बनाना कि तुम्हारी लाइफ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 गोल्स हैं वो तुम उस लिस्ट में लिखो। ड्राइवर को लगा कि यार हो सकता है बंदा मेरी मदद करने के लिए तैयार है, तो उसने ठीक है सर मैं कर देता हूँ, ऐसा कर लूंगा। फिर वो लोग चले गए, उन्होंने अपना अपना काम किया। ऐसे ही करके 2-4 दिन बीत गए। एक दिन जब वो लोग दोबारा काम से निकले तो ड्राइवर ने उनसे बोला कि सर अभी कुछ दिनों पहले आपसे मेरी बात हुई थी, तो उसी के लिए मैं ये लिस्ट मैंने बनाई है अपने गोल्स की। वॉरेन ने उससे वो लिस्ट ली, उसको देखा और कहा ठीक है ये लिस्ट तुमने सही बनाई है, अब एक काम करो, इन 25 गोल्स में से तुम उन 20 गोल्स को हटा दो जो तुमको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो तुम उन 5 गोल्स को शॉर्टलिस्ट करो जो तुमको अचीव करना ही है एट एनी कॉस्ट, और उन 5 गोल्स को निकाल के तुम 2 दिन बाद फिर मेरे पास आओ। अब ड्राइवर का थोड़ा दिमाग सनका कि यार ये क्या कर रहा है यार, मतलब ये तो टरकाने वाले काम है, आज ये कर लो कल वो कर लो। फिर भी उसने कहा नहीं यार मालिक है, करना तो पड़ेगा। तो वो वापस उस दिन वो लोगों ने अपना काम निपटाया। फिर ड्राइवर ने जाके वो लिस्ट अपनी तैयार की 5 गोल्स की, और अगले ही दिन उसको लिस्ट दे दी
उसके बाद वॉरेन बफेट ने उससे कहा कि तो ये जो 5 गोल्स हैं ये तुम्हारी लाइफ को डिफाइन करते हैं, और जो बाकी के बचे हुए 20 गोल्स हैं वो गोल्स तुमको इन गोल्स को अचीव नहीं करने देने हैं। ड्राइवर को हंसी आ गई, उसका सर ऐसा थोड़ा ना होता, वो भी मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंस रखते हैं। इस बात पे वॉरेन बफेट ने कहा तुम एक चीज बताओ, तुम घर से ऑफिस जाने के लिए निकले हो, लेकिन तुम्हारे मन में 10 डेस्टिनेशन है जहां तुमको पहुंचना है, कि तुम्हें ऑफिस भी जाना है, रेलवे स्टेशन भी जाना है, एयरपोर्ट भी जाना है, शॉप पे भी जाना है, तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे? उसने कहा हाँ सर होऊंगा, क्यों नहीं होऊंगा, अगर मैं एक जगह पे पहुंचने के लिए निकला हूं तो मुझे उस जगह ही जाना होगा, मैं कहीं और क्यों जाऊंगा? तो वॉरेन बफेट ने भी सीधे कहा कि बस यही बात है, तुम्हारा जो गोल है, तुमने उस जो गोल को सेट किया है, तुम उस गोल को अचीव करने के अलावा अगर 10 गोल्स के बारे में और सोचोगे तो उसको कैसे अचीव करोगे? तुम खुद सोचो। अगर तुमने ये सोचा है कि तुमको बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 4 अपनी खुद की टैक्सी शुरू करना है, अगर तुम उसके बारे में छोड़कर और 10 चीजों के बारे में सोच रहे हो कि मैं अमीर कैसे बनूं, मैं पेट्रोल पंप कैसे खोलूं, तो वो कैसे अचीव करोगे जब तुमने अपने प्राइमरी गोल है वही अचीव नहीं किया है? तो इसीलिए सबसे पहले जो 20 गोल्स है ना, इनको अपनी लाइफ से हटा दो, सोचो भी मत इनके बारे में, क्योंकि अगर ये 5 गोल्स जो तुमने पहले मेरे को दिखाए हैं ये तुमने अगर अचीव कर लिए तो बाकी 20 गोल अपने आप अचीव हो जाएंगे। वॉरेन बफेट साहब के इस किस्से में हमको सिर्फ ये समझ में आता है कि हमारी लाइफ में लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। हम सबके पास हमारे गोल से रिलेटेड एक ऐसी लिस्ट होनी चाहिए जिसमें कि हमारे वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स लिखे हों जो हमें अपनी लाइफ में अचीव करना है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है 12th में 80% से ऊपर मार्क्स लाना, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि उनको कैंपस कितनी जल्दी क्रैक करना है या कितना अच्छा कॉलेज चाहिए, जॉब करने वाले हमारे दोस्तों के लिए होगा कि उनको कितनी जल्दी प्रमोशन चाहिए या इंक्रीमेंट चाहिए या और अच्छी जॉब चाहिए। आप पर्सन टू पर्सन गोल्स डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन हम सबके पास ये गोल्स डिफाइंड होने चाहिए। अगर ये गोल्स हमारे पास डिफाइंड नहीं है तो मेरी बात मानिए, आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मेरी मानिए तो आप आज से ही बैठ जाइए वो लिस्ट तैयार करने में उन 25 गोल्स की जो आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है। अब आप बोलोगे कि मैंने तो अभी आपको इस वीडियो में 5 गोल के बारे में बताया था, तो दोस्तों मैं आपको 25 गोल के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप 25 गोल लिखोगे ना तो आपको 20 गोल्स भी पता चलेंगे जो आपके लिए मायने नहीं रखते हैं। इसलिए पहले 25 गोल्स की लिस्ट बनाइए, उसमें से अपने 5 गोल्स को बाहर निकालिए, और मेरी बात मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इससे फायदा जरूर होगा, क्योंकि इस चीज को मैंने पहले खुद पे अप्लाई किया है, उसके बाद आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ। नॉर्मली मैं अनप्रिपेयर्ड होके कभी कोई वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ये वीडियो मैं अनप्रिपेयर्ड होके ही बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि इसमें आपसे सीधे बात करूँगा, जो बात मुझसे निकले वो सीधे आप तक पहुंचे। इसलिए मैंने इस वीडियो के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी। इसमें और मैं चाहूंगा कि आप इस लिस्ट को बनाने में कम से कम 6 से 7 दिन का टाइम लें या 10 दिन का टाइम लें, ताकि आपके गोल्स एकदम अच्छे से डिफाइंड हो और कुछ कंफ्यूजन ना हो उनको लेकर। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपको टाइम जितना लगे वो चलेगा, लेकिन गोल्स आपके सब सही होने चाहिए। तो दोस्तों मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल था तो यार लाइक की बटन जरूर दबाना, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उसे भी कमेंट्स बॉक्स में मेंशन जरूर करना, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, इन दी एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं जो भी कोई नए वीडियोस अपलोड करूं उसकी अपडेट आपको डायरेक्टली मिल सके। मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। He's the chairman, CEO, and largest shareholder of Berkshire Hathaway. He's considered to be one of the world's most successful investors. If you want to learn about investment strategies, you want to learn from Warren Buffett. Mentor me, Warren. When you look at the future, there's also the argument made that this is something that goes with your philosophy today. Get out of cash and get into assets, because we don't know what's going to happen to the dollar. Well, cash is always a bad investment. Yes. I mean, when people said cash is king a year ago, I mean, that's crazy. I mean, cash wasn't producing anything, and it was sure to go down in value over time. On the other hand, you always want to be sure you have enough. I mean, it's like oxygen. You want to be sure it's around, you know, but you don't need to have excessive amounts of it around. And cash, we will always have enough cash around. But anytime we have surplus cash around, I'm unhappy. I mean, I would much rather have good businesses than cash. And we found a chance in the last year, or thereabouts, to deploy. We came in with something over $40 billion in cash, and we've got about $20 billion now, and we've had some earnings. So we put a lot of cash to work, and I like that. No, I'd much rather own a good business
than have cash. And it is a hedge against the dollar? Well, you can say all assets are a hedge against the dollar. I mean, but all you know is that the dollar is going to be worth less 10, 20, 30 years from now. I say worth less, not worthless. Right. You want to watch that. But it will be, and that's true of almost every currency that I can think of. The question is how much it depreciates in value. But cash is not a place that. Now, why is that? Well, the because dollar is going to be worth less. Because we'll print more of them in relation to the amount of goods that are moving. If we dropped $1 million of cash into every household in the United States today, everybody would feel very good, except the people that invested in things that were denominated in dollars. Exactly. There will be no tendency toward deflation in this country over time, or in virtually any country. Tendency toward inflation. Absolutely. Okay. The important thing is to be able to define which ones you can come to an intelligent decision on and which ones are beyond your capacity to evaluate. You don't have to be right about thousands and thousands and thousands of companies. You only have to be right about a couple. I met Bill Gates on July 5th, 1991. We were out in Seattle, and Bill said, "You've got to have a computer." And I said, "Why?" And he said, "You can do your income tax on it." I said, "I don't have any income. Berkshire doesn't pay a dividend." He said, "Well, you can keep track of your portfolio." And I said, "I only have one stock." I said, and he says, "It's going to change everything." And I said, "Well, will it change whether people chew gum?" And he said, "Well, probably not." And I said, "Well, will it change what kind of gum they chew?" And not. And I said, "Well, then I'll stick to chewing gum and you stick to computers, I don't have to understand all kinds of business. There's all kinds of business I don't understand. But there's thousands of opportunities there. I did understand the Bank of America, and I'll be able. I'm able to do that. I'm able to understand some given percentage. But Ted Williams wrote a book called The Science of Hitting, and in The Science of Hitting, he's got a diagram, shows him at the plate, and he's got the strike zone divided into 77 squares, each the size of a baseball. And he says, if I only swing at pitches in my sweet zone, which he shows there, and he has what his batting average would be, which is 400. If he had to swing at low outside pitches, but still in the strike zone, his average would be 230. He said the most important thing in hitting is waiting for the right pitch. Now, he was at a disadvantage because if the count was 0-2 or 1-2 or so on, even if that ball was down where he was only going to bat 230, he had to swing at it. In investing, there's no called strikes. People can throw Microsoft at me and, you name it, any stock, General Motors, and I don't have to swing. And nobody's going to call me out on called strikes. I only get a strike called if I swing at a pitch and miss. So I can wait there and look at thousands of companies day after day, and only when I see something I understand and when I like the price at which it's selling, then if I swing, if I hit it, fine. If I miss it, it's a strike. But it's an enormously advantageous game. And it's a terrible mistake to think you have to have an opinion on everything. You only have to have an opinion on a few things. In fact, I've told students, if when they got out of school, they got a punch card with 20 punches on it, and that's all the investment decisions they got to make in their entire life, they would get very rich because they would think very hard about each one. And you don't need 20 right decisions to get very rich. 4 or 5 will probably do it over time. So I don't worry too much about the things I don't understand. If you understand some of these businesses that are coming along and can spot things on, if you can spot on Amazon, for example, it's a tremendous accomplishment what Jeff Bezos has done. And I tip my hat to him. He's a wonderful businessman. He's a good guy too. But could I have anticipated that he would be the success and 10 others wouldn't be? I'm not good enough to do that. But fortunately, I don't have to. I don't have to form an opinion on Amazon. And I did form an opinion on the Bank of America, and I formed an opinion on Coca-Cola. Coca-Cola's been around since 1886. There's 1.8 billion 8-ounce servings of Coca-Cola products sold every day. Now, if you take 1 penny and get 1 penny extra, that's $18 million a day.
And 18 million times 365 is 7 billion, 3 less 730 billion, or $6,570,000,000. So annually, $6,570,000,000 from one penny. Do you think Coca-Cola is worth a penny more than, Joe's Cola? I think so. So, and I've got about 127 years of history that would indicate it. So those are the kind of decisions I like to make. And you may have an entirely different field of expertise than I would have, and probably much more up to date in terms of the kind of businesses that we're seeing evolve. And you can get very rich if you just understand a few of them and understand their future. The real test of whether you would like it as an investment is whether you would be happy if it never got quoted again, and just in terms of what the asset did for you. But that doesn't, I will say this about gold. If you took all of the gold in the world, it would roughly make a cube 67 feet on a side. So if you took all the gold in the world, we could have a cube that went down there 67 feet, 67 feet high, and that would be the whole thing. Now, for that same cube of gold, it would be worth at today's market prices about $7 trillion. That's probably about a third of the value of all the stocks in the United States. So you could have a choice of owning a third of all the stocks in the United States, or you could have a choice of owning that little block of gold, which can't do anything but kind of shine there and make you feel like Midas or Croesus or something of the sort. Now, for $7 trillion, there are roughly 1 billion acres of farmland in the United States. They're valued at about $2.5 trillion. It's about half the continental United States is farmland. You could have all of the farmland in the United States. You could have about 7 Exxon Mobils, and you could have $1 trillion of walking around money. And if you offered me the choice of looking at some 67-foot cube of gold and looking at it all day, maybe touching it, fondling it occasionally, and then saying, do something for me, and it says, I don't do anything, I just stand here and look pretty. And the alternative to that was to have all the farmland in the country, everything, cotton, corn, soybeans, 7 Exxon Mobils, just think of that, add $1 trillion of walking around money. Maybe call me crazy, but I'll take the farmland and the Exxon Mobils. What's your advice about that? You can't constantly sit there and wait and say, oh, it's going to go higher, it's going to go higher. We don't even think about that. What we think about is how much is it selling for, how much do we think it's worth. When we bought it at $35 billion effectively, I felt the company was probably worth at least $100 billion. How did it come to your attention? How do you find a stock like PetroChina? I sit there in my office and I read an annual report, which fortunately was in English, and it described a very good company, and told about the oil reserves, told about the refining, told about the chemicals, everything else. And I sat there and read it, and I thought to myself, this company is worth about $100 billion. Now, I didn't look at the price first. I look at the business first and try and figure out what it's worth, because if I look at the price first, I'll get influenced by that. So I look at the company first. I try to value it, and then I look at the price, and if the price is way less than what I've just valued it at, I'm going to buy it. And how do you value it? Well, that's the trick. Yeah. But it's essentially what I would pay for the whole business if I could buy it. How do you know when to throw in the towel on an investment or a business? When you throw in the towel on an investment or business. Or business? Yeah, well, what you know is you do it too late. I went in the textile business by accident in 1965, and I threw in the towel about 20 years later, and that was about 20 years too late. There's a great tendency to want to hold on, justify old decisions. I mean, that's a human trait. And when you really know you've got a bad business is when you have a good manager and you're getting bad results. I mean, when you're getting bad results with a bad manager, you still have to examine the question of whether you can get better results if you get a better manager. Usually you can't. I've said in the past, that when a management with a reputation for excellence encounters a business with a reputation for bad economics, it's the reputation of the business that remains intact. And I've proved that many times. There are businesses that are just plain tough, and there may be too many competitors, but there's reasons why they don't drop out. There's reasons. Well, we started out in textiles, and we made over half of the
the linings for men's suits in the country. And we went through World War II and got awards, and Sears Roebuck named us their supplier of the year and all of that sort of thing. And then we'd say, well, we'd like to increase the price of these linings a quarter of a cent a yard. And Sears would say, you must be out of your mind. There's 10 other guys that'll sell it to us at the old price. And nobody ever went into a Sears store and said, I'd like a blue serge suit with a Hathaway lining. You know? It didn't exist. We had no connection to the consumer. And there are lots of lousy businesses, you know, and there's lots of wonderful businesses. And my job over the years has been to try and figure out which is which, and I've made plenty of mistakes. I bought a company called Dexter Shoes in the early 90s. I paid $400+ million for it, and it made a lot of money before I bought it. But you know, as soon as I bought it, they pulled some switch or something, and it immediately started losing money. And it was because of foreign competition, so on, or maybe it was because I owned it, I don't know. And it went to zero. And the worst thing was that I'd paid for it in stock, so that $400 million in stock I gave at the time is now worth about $5 billion. So every time Berkshire stock goes down, I feel a little bit better because of my opportunity loss on this business. But you know, when I looked at Dexter Shoe, they had a good position in retailers. They turned out good shoes. They had a great workforce, all kinds of things. But I just forgot one thing, that they weren't going to make shoes in the United States anymore. So you make mistakes, and it does pay to recognize quickly when you've made them. If you've got a good person running a business and it isn't making any money, you know, you're in the wrong business, and you've got to face up to that. Generally speaking, investing in yourself is the best thing you can do. Anything that improves your own talents. Like, nobody can take it away from you. They can run up huge deficits, and the dollar can become worth far less. You can have all kinds of things happen. But if you've got talent yourself, and you've maximized your talent, you've got a terrific asset. And so that doesn't mean everybody should go to college, but it does mean that any way you find to improve, communication skills are enormously important. I mean, I took a Dale Carnegie course that I paid $100 for, and it was worth a college degree. At least I thought it was. Maybe this interview will convince people otherwise. Thank you guys so much for watching. I made the Mentor Me series because I wanted to spend a little bit more time with super successful people, and I hope some of their magic pixie dust rubs off on us. So I'd love to know what you thought of this video and what lessons you learned that you're going to apply to your life and how. I'm really curious to find out. Leave in the comments below. I'll join the discussion. Thank you so much for watching. Continue to believe, and I'll see you soon. देखिए, इस वीडियो में मैं आपको वॉरेन बफेट साहब के वो 17 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज, रेपुटेशन, यानी अपनी साख बनाने में कम से कम 20 साल लगते हैं और उसको बर्बाद करने में बहुत ज्यादा हो जाएं तो 5 मिनट। आप अपनी जिंदगी में चाहे कुछ भी करें, जब भी करें, इस लाइन के बारे में जरा सा सोच लीजिएगा और आप जो भी करेंगे थोड़ा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप अपना समय अपने से बेहतर लोगों के साथ नहीं बिता रहे हैं तो आप अपना समय बेकार कर रहे हैं। तीसरी चीज, अपने से बेहतर लोगों के साथ समय बिताने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि धीरे धीरे हम भी उनके जैसे होते चले जाते हैं। चौथी चीज, अपने रोल मॉडल्स बहुत ध्यान से चुनिए। अब देखिए, रोल मॉडल्स चुनने के 2 सबसे बड़े फायदे ये होते हैं कि आपको ये चीज एग्जैक्टली मालूम होती है कि क्या करना है और कैसे करना है। और अगर आपको ये 2 चीजें मालूम हैं, आप बहुत लंबी पारी खेल सकते हो। 5वीं चीज, आप अपनी जिंदगी में चाहे कितना भी पैसा कमा लीजिए, पर अगर कोई भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद गई। अब ये चीज वॉरेन बफेट साहब ने असल में इसलिए बोली है ताकि वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो लोग चैरिटी के कामों में आगे आएं। पर फिर भी अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं भी है तो भी अपनी इनकम का थोड़ा सा हिस्सा चैरिटी में जरूर खर्च करना चाहिए।
छठी चीज, किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले उसकी हिस्ट्री जरूर देखना चाहिए। इस चीज को जरा सा समझ लीजिए। मान लेते हैं आप कोई स्टूडेंट हैं और कोई सा कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे सही तरीका यही रहता है कि आप सबसे पहले जाकर उस स्टूडेंट से बात करें जो उस कोर्स को खत्म कर चुका है। अगर आप कोई सा प्रोफेशन चुनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस आदमी से बात करना चाहिए जो उस प्रोफेशन को कर रहा हो। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमको मालूम चल जाता है कि हमें इस काम में हाथ डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मालूम होता है कि आगे जाके क्या परेशानियां आने वाली हैं, पर वो फिर भी उसकी तैयारी नहीं करते। भाई, एक स्टूडेंट है जो साल भर पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको मालूम रहता है कि फाइनल एग्जाम आएंगे और उसमें उसको परेशानी होगी, पर फिर भी वो उस चीज की तैयारी नहीं करता। पर वो स्टूडेंट जो बहुत ही अच्छे नंबर्स लेकर आता है, वो ना केवल पढ़ाई करता है, वो उन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से तैयारी करता है जो पिछले 10 साल में पूछे गए हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई ऐसा कोर्स ले लिया है जिसके अंदर आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तो आप किसी तरह से उस कोर्स को तो कंप्लीट कर लीजिए, पर साथ ही साथ अपनी इंग्लिश पर बहुत ज्यादा मेहनत करते रहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको कहीं ना कोई अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। 8वीं चीज, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, नॉलेज सब कुछ होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे ज्यादा पैसे कमाएं, तो आपकी नॉलेज सबसे ज्यादा होना चाहिए। आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाइए, उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं, और इसीलिए आपको लगातार ये सीखने की कोशिश करना चाहिए कि क्या करने से क्या परेशानी हो सकती है और उस परेशानी से किस तरह से निपटा जा सकता है। पर सीखने का सबसे सही तरीका खुद गलती करके सीखना नहीं होता, सीखने का सबसे सही तरीका दूसरे की गलतियों से सीखना होता है। 9वीं चीज, अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपका चाहे कितना भी मन हो रहा हो, आप उस चीज को मत खरीदिए। एक बार किसी इंटरव्यू में वॉरेन बफे साहब से यह पूछा गया कि आप महंगे सूट्स क्यों नहीं पहनते। उस वक्त वो जो सूट पहने हुए थे वो वाकई में सस्ता टाइप का था, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया कि नहीं, ये महंगा ही है, ये बस मैंने पहना हुआ है इसलिए ये सस्ता दिख रहा है। इस चीज को समझ लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ज्यादातर लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वो पैसे को खर्च करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। और जहां तक महंगी चीजें खरीदने का सवाल है, वॉरेन बफे साहब ये कहते हैं कि महंगी चीजें हमें उन्हीं दिनों में खरीदना चाहिए जिनमें वाई नहीं लगता हो। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज, पैसे कमाने के बारे में वॉरेन बफे साहब ये कहते हैं कि हमेशा वो वाला काम पकड़ना चाहिए जिसे आप तब भी करते जब पैसा कमाने के लिए आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ आपको कोई ऐसा काम भी शुरू कर देना चाहिए जिस काम के होते रहने के लिए आपकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत ना पड़ती हो। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देना। इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। देखिए, कॉलेज में मेरी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, पर जब मैं YouTube पर पढ़ाता हूं तो मेरी फिजिकल प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है। भाई, वीडियो बना हुआ है, जिसको जब देखना हो तब देख सकता है। इस चीज को भी समझिए कि आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो और आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हर चीज पूरा होने के लिए अपना समय लेती है। 16वीं चीज, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आप अपना फोकस हमेशा कस्टमर्स पर रखिए और उनको जितना ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं उतना ज्यादा फायदा पहुंचाइए। 17वीं और आखिरी चीज, सामने वाला आपको चाहे कितना भी फायदा क्यों ना पहुंचा सकता हो, अगर आप उसको पसंद नहीं करते उसके साथ मत जुड़िए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया,
थैंक यू वेरी मच। Warren Buffett is without a doubt one of the most successful investors of all time. As of right now, his net worth is over $80 billion, making him one of the wealthiest people in the world. Although he is best known for his financial advice, Buffett himself has identified his focus and productivity as one of the major keys to his success. So how can you achieve Buffett's laser-like focus? Let's take a look at a story between him and his pilot. For many years, Warren Buffett flew on his private plane with his own personal pilot. Over those years, the pilot was able to develop a good friendship with Buffett, and one day he wanted to ask him for some advice. The pilot felt limited both financially and personally, so he wanted to know his boss's secret to success. Here's the advice Buffett gave him. He told him to make a list of 25 things he wanted to achieve. Everything that came to mind had to be written down, all the things he considered to be success in his career and life. The pilot took some time and wrote everything down. Then Buffett asked the pilot to review the list and circle his top 5 goals, the things he wanted the most. This was a lot harder for the pilot since everything on his list was important to him. But Buffett insisted that he could only pick 5. So after some hard thinking, he made 5 circles. At this point, the pilot had 2 lists. The 5 things he had circled were on list A, and the other 20 things were on list B. Buffett now asked him what he planned to do with the things on the 2 lists. The pilot said that he would concentrate on his top 5 goals and work on the other 20 as he would see fit. But Buffett replied, "No, you've got it all wrong. Everything you didn't circle just became your avoid at all cost list. Forget about those goals until you have succeeded with your top 5. This is why Buffett's strategy is brilliant. Items on your second list are things you care about. They are important to you, so it's very easy to justify spending your time on them. But when you compare them to your top 5 goals, those things are nothing but distractions. Spending time on secondary priorities is the reason you have 20 half-finished projects instead of 5 completed. So it's no surprise that Buffett has done as well as he has. His dedication to running Berkshire Hathaway, his #1 priority, is almost unrivaled. That's why I urge you to write down your top 25 goals, which is a lot harder than it sounds. Circle the most important 5, which is even harder, and avoid working on the other 20. But since just knowing isn't enough, you have to take the first step towards your priorities and actually take action. That way, you can achieve focus like Warren Buffett. Thanks for watching. If you enjoy videos like this, make sure to press that like button. And if you're new to the channel, make sure to subscribe. सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंशियल गुरुजी को और प्रेस कीजिए बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल फाइनेंशियल गुरुजी में। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वॉरेन बफेट के 3 इन्वेस्टिंग रूल। अब देखिए, ये जो नियम है वो तो आपको गूगल, फेसबुक, यूट्यूब पर खूब मिल जाएंगे, लेकिन इन नियमों का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वही मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो स्टॉक मार्केट में काफी पैसा कमा सकते हो। तो सबसे पहला इन्वेस्टिंग रूल है दोस्तों, वो है नेवर लूज योर मनी एंड ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर फर्स्ट। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है अपनी कैपिटल को बचाए रखना, अपने पैसे को बचाए रखना। देखिए, अगर आपको स्टॉक 100 रुपए में खरीदते हैं और वो 90 रुपए हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10% का लॉस हुआ है। लेकिन जब आपको ये लॉस रिकवर करना पड़ेगा तो आपको 11% वापस अर्न करना पड़ेगा, तब जाके आपके स्टॉक का भाव 100 रुपए आएगा। तो ऐसे ही आप देखिए, ये जो लोग स्टॉक मार्केट में अपनी कैपिटल की चिंता नहीं करते हैं, उनको कितना बड़ा लॉस होता है। अब ये जो स्क्रीन पे मैं आपको चार्ट बता रहा हूं, आप उसके हिसाब से देखिए। अगर आप 10% का नुकसान करते हैं
तो आपको 11% कमाने पड़ेंगे उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। अगर आप 20% का नुकसान करते हैं तो आपको 25% कमाने पड़ेंगे उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। अब अगर आप 30% का नुकसान करते हैं तो आपको 43% कमाने पड़ेंगे उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। अगर आप 40% का नुकसान करते हैं तो आपको 67% कमाने पड़ेंगे उस नुकसान की भरपाई के लिए। अगर आप 50% का नुकसान करते हैं तो आपको 100% कमाने पड़ेंगे उस नुकसान की भरपाई के लिए। तो ऐसे ही दोस्तों ये कैलकुलेशन का खेल चलता रहता है और एंड में जब कभी आपका 100 रुपए का लिया हुआ स्टॉक अगर 20 रुपए हो जाए तो उस वक्त आपको 80% का नुकसान नहीं हुआ है दोस्तों, आपको 400% का नुकसान हुआ है, क्योंकि जब वो स्टॉक बढ़ेगा तो 20 रुपए से बढ़ेगा और उसको 100 रुपए आने के लिए 400% का गेन करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए एक ही बात ध्यान रखनी है दोस्तों, वो है राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करना। देखिए बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम स्टॉक लेते हैं, तब तो स्टॉक में सब कुछ सही होता है, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है जो उसके लिए सही नहीं है और नियर फ्यूचर में उस स्टॉक के गिरने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हमें उस स्टॉक में थोड़ा बहुत लॉस भी बुक कर लेना चाहिए ताकि हम भविष्य में होने वाले बड़े लॉस से बच सकें। तो दोस्तों सबसे पहला रूल है अपनी कैपिटल को बचाए रखना, क्योंकि प्रॉफिट तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, लेकिन अगर कैपिटल ही नहीं बची तो प्रॉफिट कमाओगे कैसे। अब दूसरा रूल है दोस्तों, वो है रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। देखिए हर कोई कहता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है या जुआ होता है, सट्टा होता है, लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करना तब रिस्की है जब आपको पता नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं उस मार्केट में। देखिए वॉरेन बफेट के मुताबिक आप कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए जिसके बिजनेस को आप समझ नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने किसी ऑयल एंड गैस कंपनी में इन्वेस्ट किया है लेकिन आपको उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, उस कंपनी के बिजनेस की ABCD आपको नहीं पता है, आपको ये नहीं पता कि स्टॉक का रेट ऊपर क्यों जाएगा या नीचे क्यों आएगा, आपको ये नहीं पता कि यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज का कितना रोल है इनके बिजनेस में या इंटरनेशनल फैक्टर कितना वर्क करता है इनके बिजनेस में, तो ऐसी कंपनियों में आप कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। जिन कंपनियों के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि ये बहुत रिस्की ट्रेड होगा, आप उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए जिनके बिजनेस के बारे में आपको अच्छे से पता है, अदरवाइज मत कीजिए। पहले समझिए, सीखिए, फिर पैसा लगाइए। तो ये हुआ दूसरा रूल दोस्तों। अब तीसरा रूल है दोस्तों, वो है प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। देखिए मार्केट में अच्छी कंपनीज के स्टॉक को खरीदना आसान है, लेकिन उसको अच्छी वैल्यूएशन पे खरीदना बहुत मुश्किल है। तो इस रूल में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपने किसी अच्छे स्टॉक को अच्छी वैल्यूएशन पे खरीदा है तो वो आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। वो यहाँ शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको वो स्टॉक अच्छा रिटर्न ना दे या ना बढ़े या 2-3% का लॉस भी दे, लेकिन जब बात लॉन्ग टर्म की आती है और अगर आपने किसी अच्छे स्टॉक को अच्छी वैल्यूएशन पे लिया है तो वो आपको प्रॉफिट जरूर देगा। तो दोस्तों ये तो 3 रूल हुए, लेकिन इसके अलावा भी 4-5 रूल और है जो इस स्टॉक मार्केट को और मनी मैनेजमेंट को समझने के हिसाब से काफी अच्छे रूल है वॉरेन बफेट के। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उन रूल से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर ज्यादा संख्या में कमेंट आए तो मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इनकम टैक्स और GST रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लवली फ्रॉम यूट्यूब चैनल मिलियन डॉलर आइडियाज। आज हम बात करेंगे 5 टिप्स टू गेट सुपर रिच बाय वॉरेन बफे, जो कि एक बिलियनियर इन्वेस्टर हैं। हे फ्रेंड्स, सपोज 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है कपिल ग्रोवर और दूसरे का नाम है सुनील शर्मा। दोनों ने एक साथ अपनी एजुकेशन पूरी की और बाद में दोनों को एक ही कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। कपिल को जो सैलरी मिलती है उसमें से 40% वो अपने रूटीन खर्च जैसे कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, क्लोथ्स एंड फूड में खर्च कर देता है, और कुछ पैसों से वो अपने लिए न्यू गैजेट्स खरीद लेता है जैसे कि सेल फोन, लैपटॉप, गेम्स एटसेट्रा, और बाकी पैसे वो रेस्टोरेंट, फूड, न्यू ब्रांडेड क्लोथ्स, इंटरनेट, न्यू बाइक या कार की EMI पे खर्च कर देता है। एंड इस रीजन से मंथ एंड में उसके पास सेविंग्स की बजाय EMI होती है।
और इसकी दूसरी तरफ सुनील, जो बेसिक एक्सपेंसेस करने के बाद उसके पास पैसे बचते हैं, उसमें से 90% वो बैंक में, शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देता है। कुछ पैसों को वो इमरजेंसी के लिए अपने पास रख लेता है और सेविंग का ओनली 10% ही वो घूमने पे या बाहर खाने पे खर्च करता है। सो फ्रेंड्स, आप बताइए कि दोनों फ्रेंड्स में से फ्यूचर में कौन ज्यादा रिच होगा और कौन सा फ्रेंड डेब्ट में होगा। अगर दोस्तों आप ये बात समझ गए तो आप वॉरेन बफे के 5 टॉप रूल्स टू बिकम रिच सीख चुके हैं। अगर आप वॉरेन बफे के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। वॉरेन बफे एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, इन्वेस्टर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर माने जाते हैं। ये दुनिया के सबसे रिच पर्सन्स में से एक हैं, जिनकी प्रॉपर्टी आज के टाइम में 50,700 करोड़ से भी ज्यादा है। वॉरेन बफे के पास एक ही सिंपल कार है जिसे वो खुद ड्राइव करते हैं। कार के लिए उन्होंने कोई ड्राइवर भी नहीं रखा हुआ। उनके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं है। वो एक सिंपल से घर में रहते हैं, जहां रहते हुए उन्हें 50 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्राइवेट जेट कंपनी के ओनर हैं, बट वो कभी भी प्राइवेट जेट में ट्रैवल नहीं करते। वो सेल फोन तक कैरी नहीं करते। दोस्तों, इसके अलावा भी उनमें बहुत सारी खास बातें हैं। कभी अगर आपके पास टाइम हो तो आप उनके बारे में डिटेल में इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 5 टॉप रूल्स की। रूल नंबर 1। सो वॉरेन बफे का पहला मैजिक रूल है सेविंग फर्स्ट, स्पेंडिंग लास्ट। दोस्तों, हमारे पास जो भी पैसे बेसिक एक्सपेंसेस करने के बाद बचते हैं, उसमें से हमें एटलीस्ट 50 to 70% सेव कर देने चाहिए, और उसके बाद जो पैसे हमारे पास बचते हैं उसमें से हम खर्च कर सकते हैं। अगर हम सैलरी आते ही सेविंग के पैसे अलग अकाउंट में सेव रख देंगे तो इससे ऑटोमेटिक सेविंग हो जाएगी, क्योंकि इससे हम अपने माइंड में एक मेंटल लिमिट सेट कर सकते हैं मनी स्पेंडिंग के लिए, जो कि एक्सपेंसेस कंट्रोल करने में भी काफी हेल्प करेगा। मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप देखें कि आपकी सैलरी में से बेसिक एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद आपके पास कितने पैसे बचते हैं, और फिर उसमें से एटलीस्ट 50% आप कहीं सेव कर दो। ये आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए काफी यूजफुल होगा। फ्रेंड्स, सेकंड मैजिक रूल है डू नॉट बाय थिंग्स यू डोंट नीड। कई बार क्या होता है कि हम जब मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं कि 50% डिस्काउंट है, तो हम ऐसे कुछ कपड़े या शूज ले लेते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं होती, या फिर हम उसका काफी कम बार यूज कर पाएंगे, बट हम ले लेते हैं क्योंकि उस वक्त वो हमें अट्रैक्टिव लगी या फिर उस पर डिस्काउंट है इसलिए। अगर आपने 2000 की बजाय 1000 रुपीज पे किए तो आप ये मत सोचिए कि आपने 1000 रुपीज बचा लिए, बल्कि आपने 1000 रुपीज का एक्सपेंस कर दिया, वो भी अननेसेसरीली। ऐसे ही कुछ और इंसिडेंट्स होते हैं जब हम अननेसेसरी चीजें बाय कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज से 1 साल पहले तक मैंने भी काफी पैसे वेस्ट किए हैं माउंटेन शूज, टैबलेट या स्पोर्ट्स की कुछ आइटम्स पे, जिसे मैं कभी यूज भी नहीं करता। सो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई चीज खरीदें तो आपको एक बार सोच लेना चाहिए कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं। अगर आपको अभी उसकी जरूरत नहीं है तो आपको वो चीज अभी नहीं खरीदनी चाहिए। रूल नंबर 3, क्रिएट मोर अर्निंग सोर्सेज। फ्रेंड्स, हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी इनकम ही इतनी कम होती है कि हम बेसिक एक्सपेंसेस करने के बाद कुछ खास बचा नहीं पाते, एंड इस तरह अगर हम थोड़ी सी सेविंग कर भी लेंगे तो हम उससे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। तो हमें अपनी सेविंग्स कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करनी होती हैं कि हमारे पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। इसके 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, कि हम इसे म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी में लगा दें, जो कि हमें 10 to 20% ईयरली रिटर्न दे सकती है। सेकंड, हम कोई एसेट खरीद के उसे रेंट पर दे सकते हैं। थर्ड, हम किसी बिजनेस में शेयर ले सकते हैं जो हमें काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। फोर्थ, या फिर हम कोई फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 2 या 3 इनकम सोर्सेज हो सकते हैं जिससे हम और ज्यादा इनकम कमा सकते हैं और उसे इन्वेस्ट करके अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। रूल नंबर 4 और 5, लिमिटेड रिस्क एंड डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। दोस्तों, अगर आपने सेविंग करके अपने सारे पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए और सपोज कीजिए किसी रीजन से शेयर मार्केट डूब गई, तो आपको काफी लॉस हो सकता है। सो वॉरेन बफे कहते हैं कि आप उतना ही रिस्क लो जितना आप बियर कर सकते हो, ताकि अगर आपको लॉस हो तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एक और तरीका है कि हम कभी भी अपने सारे पैसे किसी एक इन्वेस्टमेंट में ना लगाएं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डेब्ट्स, शेयर, गोल्ड, बैंक एफडी या प्रॉपर्टी में डिवाइड कर सकते हैं,
जिससे आपका रिस्क बैलेंस हो जाएगा। अगर एक इन्वेस्टमेंट में आपका रिटर्न कम आता है तो दूसरी इन्वेस्टमेंट रिटर्न को बढ़ा देगी, सो बैलेंस हो जाएगा। सो दोस्तों, मैं अब आपको एक रीकैप देता हूं अबाउट द की पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट, सेविंग फर्स्ट, स्पेंडिंग लास्ट। सेकंड, डू नॉट बाय थिंग्स यू डोंट नीड। थर्ड, क्रिएट मोर अर्निंग सोर्सेज। फोर्थ, लिमिटेड रिस्क। एंड फिफ्थ, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हो सकता है आप वॉरेन बफे की तरह दुनिया के सबसे ज्यादा रिच पर्सन तो ना बने, बट श्योरली आप बाकी लोगों से काफी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे और आपका फ्यूचर काफी अच्छा होगा। इट टेक्स टाइम एंड हार्ड वर्क टू मेक अ वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, then why don't you subscribe our channel? Thank you.